जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, श्याम सुंदर यमुना महारानी की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी Hare Krishna. Please accept our humble obeisances to Srila Prabhupada, Guru and Gauranga. We welcome you all, and I express my heartfelt gratitude and warm welcome to all the senior Vaishnavas of International Society of Krishna Consciousness, Iskcon, and all the devotees who have gathered and are listening through the medium of Zoom, Facebook, YouTube, etc. And especially, I would like to welcome the heart-filled organizers of this Bhagvatam Katha who reside in Florida, USA. The whole Patel family who have organized this beautiful Katha in the memory of their pious ancestors. ऐसे स्वजनों को स्मरण करते हुए इनकी पावन स्मृति में, and in the memory of these, this beautiful Bhagavatam Katha has been organized by these four sisters, Darshana Mata, Jayashri Mata, Yush Bhai, Amrish Bhai, Mohini Mata, and Kulin Prabhu. And their brother Radha Bhai. I welcome you all on the second day of the 321st Katha, and our heartfelt humble obeisances at your lotus feet. मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है अमित नारायण प्रभु, जरा आप facing some technical issue, so if you can spare 2 minutes. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So, as we all know, today is the Dasmi and tomorrow is the Ekadashi. So, kal aane wale kal, yani ki, what is the date? It's called 28. Yes. So that date is a Shatatila Ekadashi, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, और आप सभी से निवेदन है कि एकादशी का पालन कीजिए। और प्रभु जी ने बहुत बार एकादशी की महिमा को बताया है, जो कि आप हमारे चैनल पर जाकर प्राप्त कर सकते हो। और कल जो कि एकादशी है, जिसका नाम है सठ तिला, और इस एकादशी में तिल का बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर इसमें संस्कृत में एकादशी के महत्व के विषय में भी लिखा है कि किस प्रकार एकादशी को फॉलो करने से, जैसे प्रभु जी ने बताया कि हम सब भक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, या भक्ति में शुद्ध भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। तो मेनी टाइम्स प्रभु जी हैज सेड दैट जो भक्ति की जननी है, दैट इज माधव तिथि, एंड माधव तिथि इज कॉल्ड एकादशी।
तो भक्ति की जननी जो कि आने वाला दिन है, और हमारे इस्कॉन में प्राय बताया जाता है कि इस दिन हमें प्रयास करना चाहिए कि एकादशी व्रत का पालन करें। और इस एकादशी व्रत के पालन से क्या होता है, हम भगवान के और समीप करते हैं। जस्ट एज द नेम itself reveals that we call this उपवास। उप means नजदीक and then वास means to रह, to stay। तो किसके नजदीक रहना, तो मतलब भगवान के नजदीक रहने को महत्व है इस दिन। और प्रतिदिन हम इस दिन एकादशी का दिन भगवान नाम का अधिक से अधिक जाप करते हैं, जिससे कि हम सब भगवान के और समीप जा सके। तो यहाँ पर यह एकादशी का महत्व जो कि भविष्योत्तर पुराण में से बताया गया है कि किस प्रकार पुलत्स्य मुनि तथा जो ऋषि दलभ हैं उनके बीच में वार्तालाप हुआ। और इस वार्तालाप के बाद इस वार्तालाप में क्या बताया गया है कि हिंदू किंवदंतियों के अनुसार वे मोक्ष प्राप्त करेंगे और पुनर्जन्म के निरंतर चक्र से मुक्ति प्राप्त करेंगे। कौन लोग? Those who will follow this एकादशी। And what happens then next? निरंतर चक्र से मुक्त होंगे। So as we all know that we are living in the cycle of birth and death, old age and disease। तो जैसे भगवत गीता में लिखा गया ना कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जीवात्मा है, ये क्या होता है इनका? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। और बार बार जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होता है व्यक्ति जो इस एकादशी का पालन करता है। एंड देन व्हाट हैपेंस? एकादशी पर तिल दान का करने का महत्व है और भक्तों को उनके वर्तमान या पिछले जीवन में जाने या अनजाने में किए गए सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा पानी के साथ तिल मिश्रित करके बीज चढ़ाने से भी मृत पूर्वजों को सात्वता प्रदान की जा सकती है। नॉट ओनली दैट, यदि हम इस पानी के साथ में तिल को चढ़ाते हैं तो क्या होता है, हमारे जो पूर्वज हैं उनको भी सात्वता प्रदान होती है, यानी he also gets satisfaction by if we do follow this एकादशी। तो बड़ा ही महत्व है इस एकादशी का। तो आप सबसे अनुरोध है कि आने वाले दिन कल जो कि सठ तिला एकादशी है, इस दिन आप सब इसका पालन करें एंड देन ट्राई टू चैंट as much as you can। जो कि हमारे इस्कॉन में संविधान है। श्री प्रभुपाद बताते हैं कि एकादशी के दिन कम से कम भक्तों को 25 माला जप करना चाहिए, 25 rounds। Normally we are advised to chant 16 rounds, but this particular day we are advised to chant at least 25th round, 25 माला, जिससे कि भगवान का स्मरण हो सके। तो हम सब भक्तों से निवेदन करें कि आप सब जो हमारे साथ में जुड़े हैं यहाँ पर इस अमृत चर्चा परिवार में अनेक समय से, तो हरि नाम का जाप अधिक से अधिक करें। और इस हरि नाम का जाप करने के लिए अब तो हमारे पास ये प्लेटफॉर्म भी है जहाँ पर हम सब एकत्रित होकर हरि नाम जप कर सकते हैं। सो you can see that every single day now we have started chanting Hari Naam with Prabhuji। To be a wonderful opportunity कि यहाँ पर हम एकत्रित होकर हरि नाम जप भी करते हैं, हरि कथा भी श्रवण करते हैं। और कल ही हम कथा में श्रवण कर रहे थे ना कि yesterday was the Republic Day और प्रभुजी was mentioning about the स्वतंत्रता। तो he also mentioned that the real independence is what? तो जो वास्तविक स्वतंत्रता है वो जीवात्मा को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करना। हाँ, श्रील प्रभुपाद भी यही बताते हैं। बिकॉज ऐसा कहा जाता है कि we think that our neighborhood country is our enemy, but the real enemy is our only mind। हमारा जो मन है वही हमारा वास्तविक दुश्मन है। श्रीमद् भागवतम में भी यही कहा गया है ना कि मनुष्य मन एवं परम कारणम बंधम मोक्षाय। तो जो मन है हमारा वही हमारे दुखों का विशेष कारण है। और जो सर्वप्रथम हमारा एनिमी है वो हमारा अनकंट्रोल्ड माइंड है। तो इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं?
by chanting Hare Krishna Mahamantra. And we have opportunity over here, as I said, that from last many days we have started this, and Prabhuji also joins us during when the katha is not there. Prabhuji also हमारे साथ में हरि नाम जप करने के लिए जुड़ते हैं, तो आप सब भी हमारे साथ में यहाँ पर जुड़िए। और समय है जो कि भारत के समय के अनुसार इसको किया जाता है ब्रह्म मुहूर्त में, तो 5:30 से 7:30 और 7 PM to 9 PM अमेरिका के समय के अनुसार है। सो आप सब से अनुरोध है कि आप सब भी हमारे साथ में हरि नाम जप करने के लिए जुड़िए, एंड प्लीज इनवाइट अदर्स ऑल्सो। जितना भी समय मिले हम सब एकत्रित होकर हरि नाम जप करें और इस प्रभुपाद की कृपा को, भगवान की इस कृपा को प्राप्त करें। सो थैंक यू वेरी मच। और आप सबसे यही निवेदन है कि यहाँ पर हम इस जूम प्लेटफॉर्म पर पिछले 2 साल से कम एकत्रित हो रहे हैं। So now we have to rise above, you know. बहुत सारे भक्त already doing, so many devotees are already doing Hari Nam, you know, in their specific time और जो ब्रह्म मुहूर्त में, and हम सबको यहाँ पर opportunity मिली है, हम सब भी इसको करें। और yeah, okay. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. All right. So now, I guess the problem is being fixed now. So we'll request Prabhuji to lead. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. परम सौभाग्य, we are extremely fortunate हम सब श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से that by the mercy of Srila Prabhupada की महिमा भागवत के माध्यम से श्रवण that we are going to listen to the glories of Yamuna Maharani through the medium of Shrimad Bhagvatam. If I ask you a question that who does the sin? पाप कौन करता है? It's a very simple question. तो हम तुरंत कहेंगे कि पाप हम करते हैं, हमारा शरीर पाप करता है. And we will immediately answer that it's we who do the sin, or it's our body that we sin through. But if we see, then the body is just an instrument to do the sin. So the sin is committed through or by our mind or our thoughts. So the root of any sin is through our thoughts. And if we want to relieve ourselves from these sins, then we need to purify our thoughts and consciousness. Sometimes we go and take a dip in the holy river Ganges. So the river Ganges can purify our body. But if we take the shelter of Srimati Yamuna Maharani, then she will purify our consciousness or our thought process. That is the reason during the 14th year of his exile, Sri Ramachandra and Sita Maharani, after roaming around in so many villages and towns, when they finally reached at the banks of Sri Yamuna Devi, then Ramachandra says a wonderful thing in front of your screens. राम जानकी दिखाए
जमुना कलिमल हरणी सुहाई। भगवान रामचंद्र ने जानकी जी को यमुना नदी दिखाई। हे सीते देखो Sri ये Ramchandra ji क्या महिमा है यमुना की, कहते हैं। showed Yamuna Maharani to Sita Maharani. राम जानकी ही दिखाई, बहुरी राम जानकी ही दिखाई, यमुना कलिमल हरणी सुहाई। भगवान रामचंद्र कहते हैं, So Lord Sri Ramchandra says that, oh Sita गंगा है ji, किसी व्यक्ति को के शरीर को पवित्र करती है, that this Ganga has an ability to purify the body of a person. But see, this holy river Yamuna मन को शुद्ध कर देती है, can purify the hearts विचारों को शुद्ध of कर देती the है, jiva or living हमारी entity सोच को पवित्र entangled in the Kali Yuga or तो the हमारे age of hypocrisy सोच and और quarrel. विचार को परम पवित्र करने वाली माँ So यमुना है। Yamuna Maharani यमुना is the one who can purify our consciousness, and we are listening to her glories. उपनिषद में एक बहुत सुंदर श्लोक है, और In the Upanishad, a very beautiful verse is mentioned, लिखा and there the sages have कि written जब तक हमारे जीवन में 8 ग्रंथि होगी, that until unless we have 8 entanglements in our life, प्राप्त नहीं हो पाएंगे। till that point we won't be able to get ईश्वर को यदि प्राप्त Ramachandra or Sri Krishna Chandra in our life. So if we want to ग्रंथि माने गांठ, get the Lord, then को पतंग उड़ाई होगी उनको पता होगा we need to get rid of these entanglements. वो जो So रस्सी होती है, you might have flown kites during the kite festival. गुजराती में उसे गूंच So, कहते हैं, so गुच्छा होता है। usually sometimes और जब the तक thread get entangles, तब तक हमारी and पतंग until unless आसमान को छुएगी नहीं। that यदि thread हम is आसमान जैसे ईश्वर को detangled, छूना चाहते हैं, राम और the kite कृष्ण को cannot go प्राप्त up करना चाहते हैं, or इस high. ग्रंथि So से until मुक्त होना unless होगा, इस गांठ we से, are इस free from गुच्छे these से मुक्त होना entanglements, होगा। only then we can reach और हम the सबके higher goal जीवन में of getting मुख्य रूप से 5 Krishna ग्रंथि in our या life. गांठ है। And there are 5 जब तक types और of से पवित्र entanglement होंगे, in तब तक this ऐसा material नहीं world. होगा। Until the point we get free from बहुत them, सुंदर कथा we won't है। be able to liberate एक ourselves. सुंदर सन्यासी थे, और So वे there was सन्यासी a महाराज very famous भजन saint. करते 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 एक गांव में पहुंचे। He was roaming around in the गांव के village, सीमा पर एक दुकान थी, और and सन्यासी जी दुकान में at the बैठे borders थे। of that village there was a आप shop. जानते हैं ना, भारत की दुकानों में बहुत बड़े डिब्बे रखे होते हैं, बहुत सारे डिब्बे होते हैं। सरल साधु, So there were quite a few boxes in that shop. So दुकानदार ने the कहा इस डिब्बे में sage नमक है, asked, सॉल्ट। "What is there in this box?" He said, उसके "This बाजू is वाले salt." डिब्बे में कहा इसमें क्या है, Then he बोले said, इसमें "In the हल्दी है। next one," he said, "there is turmeric उसके in बाजू that वाले one." डिब्बे में बोले इसमें क्या है, बोले इसमें मिर्ची है। Then he said that there is red chili in the other one. एक के बाद एक, So एक के बाद एक, डिब्बे के in बारे this में manner, सन्यासी जी पूछते गए, the sage asked और about फिर everything सारे in that डिब्बों के shop, पीछे अंत में लास्ट में एक and डिब्बा था। he said कहा that इस what's डिब्बे में in क्या the है। last दुकानदार ने कहा box. इस डिब्बे में राम राम है। क्या कहा, So the shopkeeper इस said that डिब्बे में राम राम है। in this box there is साधु समझ Ram नहीं Nam, पाया। or the name, holy name उस of the Lord. दुकानदार की So बात the sadhu वो said, साधु सन्यासी समझ नहीं पाए। the sadhu was unable to understand the बोले shopkeeper. महाराज, So the shopkeeper इन said, सब डिब्बों में तो हल्दी मिर्च धनिया
all the boxes is there spices, but the box that is empty. So in that box we call as Ram Ram. So it's a empty box, so that's why it's Ram Ram. So so the sage got a great philosophy from the shopkeeper that, that Ram can stay only when there is space or in the box which is empty. Until unless our heart is filled with all the five impurities, then we won't be able to achieve Ram. So, as mentioned in the Upanishads, the five entanglements that we need to get rid to achieve Krishna in our life. So, this body or the box, we need to get free of these five entanglements. And the first is man, that is heart. So they mentioned that the first and foremost is the heart. And our heart is filled with so many carnal desires and bad thoughts that we criticize others. All these things we do from our heart. So this is the entanglement of the heart. The second is the desire. Unless we have material desires, we won't be able to achieve the Lord. It's mentioned in the Shastras that the desire is the only thing that can burn us, and it burns the living entity. The third is the three material modes of nature. And to achieve the Lord, we need to get rid of these material modes of nature. So, so you will say that the mode of passion and ignorance is okay, is right to be get rid of, but why we need to get rid of the sattva gun or the mode of goodness? So sometimes people in the mode of goodness do so much austerity and they live a austere life, but after doing the acts of goodness we get pride that we or I did it. So that is also a kind of pride. So we need to get rid of all these three. And acco- according to the Sanskrit language, guna means a rope. So even the mode of goodness is also a type of rope which binds us. That is the reason. That is why Krishna says in Bhagavad Gita that you need to get above the three modes of material nature. And then the fourth is the bad deeds and good deeds, that is the pap or punya. And until and unless we, so you might say that we need to get rid of the bad results of our bad deeds, but but mm, we need to get rid of the good deeds as well, as it will lead us to the higher upper higher
planets like Swarga, but that also binds us. So by our good deeds, we can achieve the upper planetary system, like heaven, but we won't be able to reach to the eternal loka or to the Godhead. So these five are the obstacles in our life. And the last is the pran or our body. So this body is also a bondage, and we won't be able to get the Lord until and unless we get rid of the cycle of birth and death. So this body also is a bondage. So until and unless we get rid of all these five obstacles, we won't be able to reach the Lord. So there might be a question that what is the solution to get rid of these entanglements? So for each of these entanglement, the solution is different for all of the five. But if someone says that just tell only one thing that we can get rid of all five of these entanglements by one process, then Sri Ramchandra says that if someone takes the shelter of Yamuna Devi, then they will get rid of all these five entanglements at the same point of time. So this is the glory of Yamuna Maharani. So we need to do different things to break away these five entanglements. But when we pray to Yamuna Maharani, we can get rid of all five at the same point of time. So this is the glory and importance of Yamuna Maharani. Srila Goswami writes in Gopal Champu about Yamuna Maharani in detail. He says that he has two forms, that is, one Adi Devik and other Adi Bhautik. So the so the Adi Devik Swarup or form is epitome, which is called as Adi Devik, and the second is the Adi Bhautik or the river form of Yamuna Maharani. So Yamuna Maharani flows or starts from Yamunotri. We will discuss how Yamuna Maharani got birth and how she came to the material world. But Srila Jiva Goswami says in Gopal Champu that so, so if we see a bird eye view, then Yamuna ji is filled with lotuses, fishes, and is surrounded by trees on both the sides. Srila Jiva Goswami says that it seems that she is wearing a black sari, and all these lotuses, fishes, etc. are drawn on that sari. So, what is the meaning of Yamuna?
So till now, we have thought that Yamuna is only the water, Yamuna, Jal. यमुना माने यमुना का जल तो है, लेकिन साथ ही साथ So यमुना का रज, Yamuna means यमुना की जो not रज only the है, वो जो water of बाल के Yamuna, जो कण है, but वो भी यमुना also ही माना जाता है। the sand at the banks of यमुना का Yamuna जल ji और is उसके also उसके considered जो as धूल Yamuna. कण है, वो भी यमुना माना जाता है। और तीसरा है यमुना का विशाल तट, And the और third यमुना is जी का जो the तट है, huge वो भी bank यमुना का of स्वरूप उनके Yamuna. शरीर के She अंतर्गत is आता है। also considered as a क्योंकि part यमुना का of स्वरूप Yamuna क्या है, ji. या यमुना का आश्रय So लेंगे, whenever इन we तीनों का आश्रय लेंगे, यमुना remember जल, Yamuna ji, यमुना we रज should take और यमुना shelter का विशाल in तट। all these three things. भक्तों, यमुना जल के विषय में तो हम सुन ही रहे हैं, 7 दिन तक सुनेंगे, लेकिन So we यमुना are जल listening जी का जो about the बहुत महिमा glory है, of the ये waters of बहुत ही Yamuna विशेष है। ji, श्रीमद but जीव गोस्वामी the ने कहा, sand समग्रो of the विश्व Yamuna ji चराचरण is अनंत also very भांति। powerful यमुना जल के and रज has में, so यमुना का much जो रज glory. है, जो बालू है, जो रजकण It's है, mentioned that उसमें इतनी शक्ति the है sand कि of Yamuna समुद्र को ji is तुरंत so powerful अनंत that भगवान श्री कृष्ण को अपने immediately वश में कर सकती है। she अनंत can भगवान श्री control कृष्ण तुरंत अपने वश में हो सकते Lord हैं, Shri Krishna. यदि यमुना का आश्रय, और यमुना में जो यमुना So रज है if उसका we आश्रय take लिया जाए। the shelter of यमुना रज the की क्या महिमा है? sand of Yamuna ji, यमुना जल तो है ही, लेकिन यमुना जल के साथ यमुना की जो रज है, वो रज कोई साधारण रज so नहीं है, the Raj or the वो भगवान dust श्री of कृष्ण के Yamuna चरणों की ji रज है। is वो केवल the कृष्ण ही नहीं है, Raj वो or ब्रज की गौ माता की रज है, dust ब्रज की of the देवियों lotus की feet रज of है, the Lord, ब्रज के and गोपिकाओं की रज it है। also यमुना has की जो रज है, the dust वो of the lotus कृष्ण feet of कृष्ण all the कृष्ण और gopas, गोपियों की gopis, रज है। the और ये eternal महिमा associates of देखिएगा the Lord. भक्तों, ये And कृष्ण see के the चरणों की glory रज of की Yamuna महिमा Maharani. देखिएगा। कृष्ण के चरणों की रज, गोपियों के चरणों की रज, गोप गायों के चरणों की रज केवल The वृंदावन तक सीमित है। the the हमको कृष्ण चरण रज और dust of गोपियों के चरण रज चाहिए the तो lotus feet बिल्कुल of the Lord मिलेगा, and लेकिन धन्य the है वो eternal आत्मा associates of the Lord जिन्होंने are कृष्ण कृष्ण के सखा available गोपियों in के Vrindavan. चरणों But की रज को ब्रज से बाहर लाया imagine the glory और of पूरे Yamuna भारत में ji उसका that प्रचार कर दिया। she took क्योंकि जहां the जहां यमुना dust of बहती the है, Lord कृष्ण के and चरणों की his रज को eternal लेकर बहती associates है, और throughout the गोपियों के चरणों की country रज को लेकर बहती through है, the medium of her और आज water. वृंदावन She में प्रभाव डाल flows दिया और पूरे भारत को पवित्र कर दिया, and पूरे भारत has को पवित्र purified कर the दिया whole परमात्मा country ने भगवान के चरण की रज को प्रदान करके। by providing the यमुना dust महारानी of के जो आदि दैविक lotus स्वरूप feet हैं, of the Lord. जिसकी कथा हम लोग So, सुन रहे हैं, तो अपने so, हाथों से आंखों से तो भगवान की सेवा करती ही है, लेकिन यमुना so the महारानी आदि भौतिक Adi स्वरूप से, माने नदी के Devik स्वरूप से Roop, भी she भगवान serves कृष्ण the की Lord, सेवा करती but है। by her यमुना Adi महारानी Bhautik नदी के रूप form में also अपनी she प्रभुता is serving शक्तियों the से Lord. भगवान की सेवा करती हैं। She is कृपा serving चंपू the श्रील Lord गोपाल with चंपू all जी her बताते हैं senses. Srila Jiv कि Goswami यमुना mentions in पंछियों Gopal के Champu माध्यम से गाती है, that मतलब यमुना through जो the पंछी medium है, of the birds, Yamuna उसका ji मुख क्या है? sings. पंछी उनका And मुख what है, is her mouth? The कमल यमुना birds का are नेत्र है, his mouth, भृंग and यमुना the के अंग है, lotuses are his मछली eyes, यमुना की नासिका है, और and तरंगे the यमुना के fish हाथ is हैं। his nostrils, ये सब and यमुना the माता waves के are अंग his हैं। hands, her hands. सो माँ यमुना So these are all the भी parts of पंछियों Yamuna के ji. माध्यम से कृष्ण का कीर्तन गाती हैं। So she कमल does के the कमल रूपी kirtan नेत्र or से माँ sings, यमुना chants the holy भगवान को name देखती हैं, through the birds. भृंग By रूपी अंग lotus, से she माँ sees यमुना the eyes कृष्ण of, कथा सुनती हैं, she sees the Lord, and through मछली the रूपी ears, she नासिका से माँ listens यमुना सांस to लेती है, the pastimes of the और Lord, तरंग रूपी हाथों and through से fishes, she यमुना नदी breathes, भगवान श्री and कृष्ण through the का waves, आलिंगन करती हैं। she embraces कृष्ण Lord Shri जन्मोत्सव Krishna. दिन याद कीजिए, So जब on the श्री first कृष्ण day को of the मथुरा में birth of गोलोक लेकर जा रहे Lord थे, Shri Krishna, तो माँ when यमुना ने अपने चरणों Vasudev को ji उनके was हाथों
carrying Krishna ji on the banks of Yamuna, she embraced Lord Shri Krishna. So, in this way, Lord Yamuna Maharani has so much glories to be sung in both the Adidevic and Adibhautic forms. So, let's finish the yesterday's story that we left. So, yesterday we heard that Lord Shri Krishna, 16,107 wives were distressed and asked Yamuna ji that our husband has left us and we all are distressed and are filled with sadness. Then why and how you are in so much happiness and bliss? So Yamuna ji replies this in, in the verse present in front of your screen. She says, आत्मरामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मा स्थिराधिका तस्या दास्य प्रभावेण तस्या दास्य प्रभावेण विरहो स्मान्न संस्पृशे विरहो स्मान्न संस्पृशे। ये मैं जो श्लोक दिखा रहा हूं दिखाई दे रहा है आपको? पढ़ने में आ रहा है ना? तो ठीक है, नहीं तो मैं बंद कर दूं, मैं कुछ और कथा शुरू कर दूं, श्लोक वाली छोड़ दूं। ठीक है, श्लोक समझ में आ रहा है तो आप देख सकते हैं। so you all are able to read this verse. A very beautiful philosophy is being discussed in this verse. So the question is that we are distressed by the separation with Lord Shri Krishna, and why you are not sad or distressed? So Yamuna ji said that she asked that what is the form of Lord Shri Krishna? So the first word is Atma Ramasya. So Krishna is Atma Ram, which means who is complete in himself, and he's always happy in himself. To being happy, he doesn't need anything from outside. So that is why he's called Atma Ram, who doesn't needs anything from the outside. As to be happy, we need facilities from outside, like we need the food to feed ourselves. But that is not the case with Lord Shri Krishna. He is independent and he doesn't need anything from the outside world, and he is complete in himself. So he is an Atma Ram. So Kalindi ji explains that he's Atma Ram. Then why he is Atma Ram? So she says that this is not the quality of Lord Shri Krishna. So this quality so this quality in Krishna is definitely because his soul is Srimati Radharani. So as this body has a soul, similarly the soul for Krishna is Srimati Radhika Rani, and she is the internal potency of the Lord,
which is the pleasure potency of the Lord, and she is inside Krishna. That is why he always stay in bliss and happiness. So Krishna is Sat Chit Anand. So even if he wants, he cannot be unhappy. So if Lakshmi ji, the goddess of fortune, thinks that I be poor, it's not possible. If the sun thinks that I can go into the darkness, that's not going to happen. Similarly, Krishna can never be unhappy because he is Atmaram. He cannot be unhappy. But the question is why he is so. So, because his soul is Srimati Radhika Rani. As she is the pleasure potency of the Lord. So Krishna gets happiness from Srimati Radharani. And in the second line of the verse, it's mentioned, and I am the servant of that Srimati Radhika Rani, and because of her, the separation of the Lord is not touching me, because the pleasure potency which gives pleasure to Krishna, I am the humble servant of that Srimati Radhika Rani. This is what Yamuna Mai tells to the wives. So here is a proof in the verse. It's mentioned that Yamuna Maharani is the servant of Srimati Radhika Rani. So all our great acharyas have done the interpretations on this verse that Yamuna ji is the servant of Radhika Rani, and that is Vishakha Sakhi, because the first servant of Radhika Rani is Vishakha Sakhi, and here Yamuna ji is saying that I am the servant of Srimati Radhika Rani. So on the basis of this verse, our great acharyas have proved that Yamuna Maharani is the form of Vishakha Sakhi, or she is the part of Vishakha Rani. यमुना ही विशाखा है So hence they've proved that Vishakha Sakhi and Yamuna Rani are one and the same. In other sampradayas, in Vaishnavas lineages, they consider Yamuna ji as in different forms, but in our lineage of Gaudiya Sampradaya, we believe that Vishakha Sakhi is the Yamuna river. And it's mentioned that in the form of water, she is Yamuna, and in the form of a woman, she is Vishakha Sakhi. So we are all the followers of Rupa Goswami, and in his Yamuna Ashtakam, Srila Rupa Goswami says, and Sri Baldev Vidya Bhushan interprets the same, and he says in front of your screen, so he says that we all should pray to Vishakha Sakhi
And she is the epitome of Yamuna Maharani herself. So, so these two are the same. So this is all technical. So it's not just we should just go and take a dip in the holy river Yamuna ji, but we should also understand the glories and importance of them. So Yamuna ji says that I am untouched by the mellow of separation because I am the humble servant of Radhika Rani, and who serves Radhika Rani can never be unhappy. And she says that you, who are you all? You also are the part and parcel of Srimati Radhika Rani. And that is the reason you all became wives of Lord Shri Krishna. Because Radha and Krishna are eternally eternal couple. So Krishna has already left for the spiritual world, and Srimati Radhika Rani is also in the eternal abode of the Lord. So here Kalindi ji says that they both are together in the eternal abode, and you all are the part and parcel of Srimati Radhika Rani. So when Radha is with Krishna, then why are you disturbed? Because you are the part and parcel of Srimati Radhika Rani, and I'm the humble servant of Srimati Radhika Rani. So when Radha and Krishna are together eternally, then why you are distressed? She says that there is no need for you to distress. And what is still you're unhappy? So what is the reason? आप लोगों को भी कृष्ण का विरह कभी भी नहीं होना चाहिए So you should also not feel the distress of Lord Shri Krishna, because we all are the part and parcel of Lord of Srimati Radhika Rani. कृष्ण का विरह और शोक आपको नहीं होना चाहिए किंतु परंतु But एवं न जानित आप लोग इस तत्व even को not नहीं जानते Janita, हो इस because ज्ञान को नहीं you जानते are हो unaware इस ज्ञान को नहीं of जानते the हो philosophy, तस्मात् व्याकुलता मिता इसलिए आप सब व्याकुल हो and that is the reason you all इसीलिए are आप सब लोग distressed दुखी हो and इसीलिए आप सब unhappy. शोक में हो अब देखो पहले सिद्धांत सुनाया जाता है सिद्धांत So, पल्ले पड़ गया तो पड़ first, गया the principle is लेकिन shared. सिद्धांत समझ में नहीं If आता you है understand the इसके लिए principle, फिर दृष्टांत देना होता है ये आचार्यों की if you परिपाटी don't है यहाँ पर understand यमुना महारानी सब the जानती है तो philosophy यमुना principle, महारानी ने then पहले सिद्धांत an बताया example फिर is सिद्धांत की provided. पुष्टि करने के लिए Similarly, Yamuna फिर Maharani is दृष्टांत दे रही है explaining. First, अंतिम she श्लोक gave में the यमुना महारानी कहती है कि देखो आप लोगों को जैसा principle, विरह and है now she ऐसा is ही giving विरह an एक बार example. गोपियों को हुआ था So she says that the कहती है mellow of एवं separation that you एवात्र are feeling गोपीनाम was once मतलब इस felt प्रकार आप by जिस the प्रकार से gopis or the कृष्ण के विरह inhabitants में of दुखी थे Vraja, एवात्र गोपीनाम गोपियां भी इसी प्रकार से दुखी हुई थी and कब they were जब जब unhappy and अवसर distressed in this पूरा similar और fashion पहले एक बार क्या हुआ when कृष्ण ब्रज में Akrurji रह रहे थे और उस समय अक्रूर जी आए came to take Krishna और अक्रूर away जी कृष्ण को लेकर मथुरा from चले गए Vrindavan to Mathura. और जैसे ही अक्रूर जी कृष्ण को लेकर चले गए As soon as Krishna बहुत left सारे from Mathura, माने गोपियों को कृष्ण का विरह हुआ the inhabitants of Vraja, the एवं gopis, रस एवासी were गोपियां filled बहुत with the दुखी हुई mellows of कृष्ण के separation. विरह में They were extremely unhappy लेकिन and saddened. एक दिन उद्धव जी आए दूसरी लाइन में आप देख And सकते उद्धव जी की एंट्री then होती है Uddhav कि ji विरहम came. रसेवासी
to them. So she says the inhabitants of Raja were unhappy in the similar manner, and Uddhavji came to them and gave them eternal knowledge, and they their mind got controlled. After getting the knowledge, their heart was filled with peace, and their distress was resolved to some extent. So Kalindiji says beautifully that by the association of Uddhavji, the distress of the inhabitants of Raja, the gopis, so I mean, similarly, if you get association of Uddhavji, then you also will get relieved of this distress, and you will reach the eternal abode of the Lord. Uh, So your distress can be removed only by Uddhavji. And if you get an opportunity to associate with him, then he will send you to the eternal abode of the Lord. So in Naimisharanya, Sud Goswami says, in this manner, when Kalindi Devi or Yamuna Devi told the wives of Krishna, all the wives became happy. You all might. So they all became very happy. And then they again asked another question from Kalindi ji. So they asked that how we can meet Uddhavji, because we have never seen him. So what is the solution or a way to meet him? So how can we have association of Uddhavji? So if we want to get association of Lord Shri Krishna, so we need association of Uddhavji, then Kalindi ji says, she says that after Lord Shri Krishna left the material world, Uddhavji went to the Badrinath Dham, and by his body he is in Badrinath and he is preaching to the world, but in a minute level. So we all preachers should learn from Uddhavji that the body may be in any part of the world, but our heart should always be in Braj Vrindavan. So Uddhavji's body is in Badrinath, but his heart in Vrindavan. So Yamunaji says that
near the mountain of Govardhana hills, there is a Sakhi Sthal or a place, and and that place, ब्रजवासियों के चरणों की रज की कामना से उद्धव जी के मन में क्या था? with the desire to have ब्रजवासियों के चरणों की the रज प्राप्त। dust of the lotus feet of the तो ब्रजवासियों के चरणों की रज धारण करने inhabitants of Raja, the gopis. उस गिरिराज गोवर्धन के निकट सखी So स्थल to में get that, तत्र अंकुर वल्ली रूपेण, लता पता के रूप में he is ब्रज there में लता in the पता बनकर form विराजते हैं। of shrubs and उद्धव जी plants. लता पता के रूप में, क्योंकि प्रसंग ही कुछ ऐसा था। जब उद्धव जी ब्रज में आए, When Uddhavji came to Raja, and when he तब met ब्रजवासियों the का हृदय तो denizens उन्होंने of कुछ Raja, ठंडा किया, लेकिन so उद्धव जी तो टोटल ठंडे हो गए। he removed some of the distress of the inhabitants of Raja, but he himself became तो गोपियां उद्धव जी को कहते हैं कि उद्धव उद्धव हम जीवन भर distressed. आम खाएंगे, मैंगो खाएंगे, हम So जीवन the भर अमरूद gopis खाएंगे, say हम that जीवन भर throughout we will अमरूद खाएंगे, eat लेकिन the जामुन कभी fruits नहीं of खाएंगे उद्धव, Raja, हम we will जामुन कभी have नहीं खाएंगे। क्यों? mangoes, क्योंकि जामुन guavas, लाल रंग etc., का but होता we है will और never कलर ने हमको eat धोखा दिया है। jamun, the blackberries, because उद्धव हम जामुन नहीं खाएंगे jamun और is of यमुना black में color, and स्नान this नहीं black करेंगे color क्योंकि has यमुना भी deceived काली us, है। and we will never take a dip in the Yamuna यमुना river because she is also black. नीरमान नाऊं हवे सखी, श्याम संग समीप न जाऊं। यमुना ना नीरमान नाऊं हवे सखी, श्याम संग समीप न जाऊं। यमुना ना नीर मां न नाऊं सखी, श्याम संग समीप I न will जाऊं। not take a dip in the Yamuna river, जामुन नहीं, मैं and I काली will not जितनी भी eat चीज है उनके the ऊपर jamun, नहीं the खाएंगे, blackberries. क्योंकि I will काला not रंग go near anything that is of black color because the black color has deceived us. उद्धव जी की So Uddhavji had a great discussion with उद्धव the जी जब denizens ब्रज of में वापस Raja, आए the gopis. तो उद्धव जी ने यही कहा कि कृष्ण And when he came back to कृष्ण मैं Krishna, यहाँ पर he वापस said that लौटने वाला ही नहीं था, I was not लेकिन supposed आपने to मुझे come दूत back to बनकर you, but भेजा, because you मैं sent गोपियों me को as a कृष्ण प्राप्त करने messenger, के लिए आया हूँ, so I just गोपियों को came to संतुष्ट deliver करने आया the हूँ। message of the लेकिन बस gopis कृष्ण, अब आपके चरणों and की to 3 tell you कामना the करता हूँ। condition of the उद्धव जी denizens of the जब Vraja, ब्रज the से gopis. मथुरा वापस लौटे So और Uddhavji, कृष्ण when के came चरणों में back to नाक Mathura, रगड़ कर कहते हैं कि and कृष्ण then he मैं rubbed आपके चरणों his में भीख मांगता हूँ। nose on the ईश्वर lotus feet भगवान of the श्री कृष्ण Lord ने and अपने said that I भाव beg में you. पिरोया है। And this is beautifully मानुष expressed by Ras Khan. तो वही रस खानी, बसो ब्रज गो कुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नीत नंद की धेनु मंजारन। कृष्ण कृष्ण मरने के बाद यदि आपको मुझे मनुष्य का शरीर देना हो, Krishna, if you भीख have मांगू to कि give मुझे me the ब्रजवासी body बना of दीजिए, a human, मुझे then ब्रजवासियों I के बीच में beg you to गोप माँ give me बना देना और मेरे the प्राण birth निकाल as a दो, मेरे gopi or कर्म पूरे हो। inhabitant of Vraja. और मरने But के बाद if यदि आपको मुझे पशु बनाना हो तो कृष्ण my मुझे नंद बाबा की 9 लाख गैया के बीच में एक छोटी सी if गाय बना देना कि रात दिन ब्रजवासियों को श्याम सुंदर
if because of my bad deeds you have to make me animal, then please make me a cow of Nand Maharaj. And if you want me to make a stone, तो वहीं गिरी को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण जो खग हो तो कहाँ बस मेरो जो खग हो तो कहाँ बस मेरो कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। कृष्ण, यदि मेरे Krishna, if you want to make me a stone, then make me a stone at the foothills of Govardhan Hills, so that this I will be touched by the dust of the lotus feet of the denizens of Vraja. And Uddhavji says that if you don't want to make me a stone and want me to make a bird, then he remembers Yamuna ji and make me a bird on the tree of Kadamba on the riverbanks of Yamuna ji, so that I can touch the dust of the lotus feet of the inhabitants of Vraja, the gopis. But his heart was filled with the love and mellow of the gopis. So his body might be in Badrinath, but his heart and soul is in Vraja. And he is there in the form of a plant. So all the other wives of Krishna say that at the end, that now that you've told that where Uddhavji resides, so but now please tell us how we can get him. Although they want Krishna, but to achieve Lord, we need a great elevated saint or devotee of the Lord from Vraja who can make us meet the Lord. So they asked that how we are going to meet Uddhavji, and Yamuna Maharani answers in front of your screen. So you must go to Vraja and go to the foothills of Govardhan Hill and play the musical instruments and do Sankirtan or chant the holy names of the Lord. So here they are setting up the standard that what all instruments should be there in the Sankirtana. And the Kirtan should be filled with mellow. And it should be filled with mellows of love. And there you go and celebrate. So sometimes people say that in Iskcon you have festival now and then in Iskcon. So here the importance of celebration is mentioned here. Shamunaji says that when you go there and celebrate, so don't go there and
don't do kirtan alone. हरि रत लोकान, बहुत सुंदर शब्द है। Hari Rat Lokhan. भगवान हरि, भगवान कृष्ण So Hari means और Lord रत Vishnu or मतलब टू Krishna, एंगेज, and जो Rat means रात to दिन engage. 24 घंटा हरि में भगवत So, भजन में एंगेज हैं, मतलब so लगे the हुए हैं person who is भगवत engaged भजन in में, chanting the holy सबको names of the Lord, समान आय एकत्रित करो, and you should collect all such अकेले अकेले elevated devotees of the Lord उद्धव और भगवान नहीं मिलेंगे, हरि and रथ do लोकान Sankirtan. Only then you समन्नाययत। will get Uddhavji हरि and के Lord जो Shri रथ Krishna. है, ऐसे भक्तों को साथ में लेकर वीणा वेणु मृदंग आदि बजाते हुए भव्य कीर्तन का उत्सव करो। मैं एक चीज आज बताना चाहता हूँ, कई बार कुछ So I लोग want to बोलते हैं, share आप लोग with भागवत कथा you करते हो that तो इतना बड़ा उत्सव, sometimes इतने people लोगों को एकत्रित करना, ये सब क्या ask मतलब होता है? that you organize Bhagavatam Katha and you collect पाठ हो so सकता many है, people. Why can't हो you सकता है, लेकिन just उसमें do कोई the फल नहीं Bhagavatam मिलेगा। in नहीं तो one देखिए home? हमारे बाजू में ही है, We वहां can बैठे do थे मैं it, यहाँ बैठा हूँ, and the उन्होंने organizers are our next भगवान परिवार door के लोग थे, neighbors. वो अपने घर So पर मुझे they बिठा could के, have ये कथा हो सकती थी, कर सकते done थे, it in their homes, लेकिन महिमा किसकी but है? the glory हरि is रत जना, of वो Hari क्या Rat है? Jana. जो That is, हरि में रत है, that the ऐसे people भक्तों के elevated साथ कीर्तन किया जाए, who are भजन की engaged जाए, in तो तुरंत devotional service or परिणाम मिलते chanting the हैं, holy names, तुरंत रिजल्ट then मिलता है। we will get instant results सो महिमा हरि and भक्तों के साथ benefit. कीर्तन करने So की, that is the glory of क्योंकि जितने doing अधिक or भक्त अपने associating में with जो the highly एडवांस elevated भक्त devotees of हैं, the Lord. ऐसे भक्तों के साथ बैठकर कीर्तन करोगे तो भाव So, बढ़ता है, so when we हरि के भाव associate का and do उदान आता है, Sankirtan with और उस such अवस्था में devotees, किया गया then कीर्तन बहुत हाई our क्वालिटी का, mellows उच्च towards the क्वालिटी का Lord आ जाता है, जिससे तुरंत उसका get फल elevated प्राप्त होता है। and give instantaneous कई बार results. यमुना महारानी कहती हैं कि आप जाकर कीर्तन करो और उत्सव So मनाओ। Kalindi Devi tells that you कुछ go लोग and कहती हैं do कि celebration there. सर्व आलोको भविता नियतम महोत्सवे वितते, आप श्लोक में देख सकते हैं कि जब So ऐसे it कीर्तन mentioned in the करोगे verse that when you तुरंत do such a आपको वहां kirtan, पर उद्धव जी का दर्शन मिलेगा। you will see मतलब Uddhavji. यदि भागवत के कोई वक्ता का दर्शन चाहिए If तो you वैसा want कीर्तन करना होगा। to हमारी अमृत me, चर्चा में कितनी सुंदर, मतलब हम लोग सिस्टम से चल रहे हैं। we यमुना are महारानी क्या following the सिखा रही हैं? system. So this जाकर is what Yamuna Maharani is कीर्तन saying, करो, that कीर्तन when करोगे we do the तो भालू Sankirtan, आएगा और आपको then भागवत the सुनाएगा। elevated devotee will come तो and he यही will speak the परिपाटी है, Bhagavatam. यही थ्योरी है So this कि is पहले what भक्त the ऐसे principle is, and वहां that पर is ऐसे what we are मनोहर भाव following. से कीर्तन We, करें all the devotees और उसके assemble साथ and में do लगातार Sankirtan, and then भगवत का गान a करें। saint or an orator कई बार comes कुछ and लोग कीर्तन का speak मुंह the बिगाड़ते हैं Bhagavatam. कि ये क्या Sometimes महाभारत हो गया people है, सीधी कथा शुरू नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। सिस्टम ये है will get कि पहले वीणा मृदंग upset आदि से सरस that कीर्तन हो और फिर why so उद्धव much आलो को भविता Sankirtan, नियतम but this महोत्सवे is the वितते। process. It's उद्धव जी mentioned, and प्रकट that's होंगे, what we are जब following. उद्धव जी प्रकट So, होंगे तो उस so when Uddhavji महामहोत्सव will को देखकर manifest, उद्धव जी then पूर्ण after प्रसन्न होंगे seeing that और great बोलेंगे celebration, तुम्हारे सारे he will मनोरथ पूर्ण be कर देंगे, happy and सारा he will मनोरथ कर देंगे। fulfill इस all प्रकार your से यमुना में desires. So, in भगवान this कृष्ण ने manner, उपदेश दिया Yamuna ji और वहां पर मैं gives instructions to the wives of Lord Shri मैं अपने Krishna. कमरे में चली गई और ये So, 16 Yamuna ji 1607 left for her room, कमरे में नहीं, and all these घर पर वापस आ गई 16,107 wives और अब were in their room उनका सहारा केवल दो ही था, एक and came वज्रनंद back to their और home. दूसरे परीक्षित महाराज। कृष्ण के चले जाने के बाद जब ये So, सारी after घटनाएं Krishna खत्म हो left गई, मतलब the वो material वहीं नहीं world, रहे, तो परीक्षित महाराज हस्तिनापुर छोड़कर द्वारिका आ so गए। Parikshit Maharaj बोले मेरी shifted जरूरत from हस्तिनापुर में नहीं, Hastinapur मेरी जरूरत to द्वारिका में। Dwarika इन to माताओं को संभालना safeguard ये मेरा the धर्म है, wives of इसलिए उन Lord दिनों Shri परीक्षित Krishna महाराज as द्वारिका his में थे। responsibility. So, those कृष्ण days, के प्रभु Parikshit ji was वहां in वहां Dwarika उपस्थित थे। taking care of ये his सारी wives, पत्नियां and कालिंदी the से बात करती हैं। grandchild of अब or आइए grandson श्री of महाराज Lord के Shri पास Krishna, Vrajnav, was श्री also महाराज को there. ये सारी बात सुनाई। So, all these परीक्षित wives का स्वभाव देखिए, came परीक्षित की to एंट्री हो Parikshit गई। Maharaj and told him everything. कहते And हैं now विष्णु Parikshit Maharaj भगवत enters. वचन श्रुत्वा, इन पत्नियों ने
उस पर उनका नाम परीक्षित नहीं है। परीक्षित महाराज का So पास Parikshit ji's original name is में नाम है विष्णु रात। एक्चुअली महाराज is परीक्षित का Vishnu ओरिजिनल नाम Rat. है, लीगल नेम विष्णु That is his रात है। original legal name, कुलगुरु कृपाचार्य ने रखा था जब महाराज परीक्षित का जन्म which हुआ। was named by Kripacharya उनकी when राशि को Parikshit देखकर, Maharaj नक्षत्र was आदि को born. देखकर इनका नाम After विष्णु रात seeing रखा गया। विष्णु रात the stars of his astrology, he was named Vishnu Rat. माने ददाती, देना। So Rat और विष्णु means माने भगवान Dadati, that is to विष्णु give, कृष्ण ने and क्या Vishnu दिया, is क्या जीवन the दिया। Lord. भगवान So विष्णु Lord कृष्ण has ने given क्या him दिया, the life. जीवन दान दिया। इसलिए कुलगुरु कृपाचार्य ने इनका नाम So विष्णु he रात gave रखा। him the boon of life. और That is why he was बाद में named लगा Vishnu कुलगुरु Rat कृपाचार्य by ने देखा Kripacharya. कि ये लड़का जब भी कोई इसके सामने आता है So तो इसको Parikshit दूर दूर के देखता है, name was ये सोचकर कि माता के गर्भ में मैंने जिस भगवान named कृष्ण को later. देखा था, क्या ये वो तो नहीं है? माता के गर्भ में मैंने So जिस people कृष्ण को used to देखा था, वो तो observe नहीं है? him, परतः that क्षण लोगों का परीक्षण करने के कारण everyone he नाम used to हुआ meet, परीक्षित। that ये तो सेकंड नेम था, is he the फर्स्ट one नेम विष्णु राज। who saved me? सूत जी So कहते हैं he used to observe people. That is why he was named Parikshit श्रुतवा। later. इन पत्नियों ने जब विष्णु रात परीक्षित महाराज को सुना, ये सारी बात सुनाई, तो प्रसन्न परीक्षित महाराज तुरंत प्रसन्न हो गए। और So प्रसन्न when होकर उसी समय खड़े हो the गए wives told this to और Parikshit बोले Maharaj, देरी so काहे Parikshit की, Maharaj stood at उद्धव जी once से मिलना है and he said that और उद्धव जी there से should not, we should not श्री waste कृष्ण even को 1 मिलना minute. है, तो इसमें देरी नहीं करनी है, आज ही मैं सारा काम शुरू कर देता हूँ। So उसी समय today itself I will make द्वारिका से सीधे ब्रज arrangements. और ब्रज में आकर तत्र एव And the same day he left for Braj from Dwarika. चला, इसी श्लोक में परीक्षित ब्रज में पहुंच गए। कितने In the same verse he is हमको told, and in the same verse he reaches Vrindavan. How much enthusiasm Parikshit Maharaj has. ठीक है 3-4 साल के बाद, लेकिन यहाँ जैसे ही If we are told to go to Vrindavan, we will wait for 3-4 years. But here, Vrindavan, Parikshit leaves for Vrindavan at instant. सत्वरम, सत्वरम माने तेज गति से, मतलब जल्दी, तत्काल महाराज परीक्षित ने उद्धव जी से मिलने का आयोजन कर दिया। और महाराज So परीक्षित he ने immediately arranged to meet with Uddhav ji. And he arranged a huge arrangement for all the wives to stay, and because all others will also accumulate. So Suji was asked where Parikshit Maharaj did all these arrangements. So it was said, संस्कृत साहित्य भी कुछ विशेष है। गोवर्धनात्, गोवर्धन से अदूरेण, मतलब गोवर्धन से दूर नहीं, माने गोवर्धन से निकट। सो महाराज परीक्षित गोवर्धन से निकट वृंदारण्य है, वृंदावन में सखी स्थल है, सखी के स्थल में so प्रवुत्त कुसुम अम्बोधो। तो गोवर्धन के निकट एक वन है, एक near Govardhan ji there is a forest and there is a Kusum Sarovar, कृष्ण संकीर्तनोत्सव। and there कुसुम सरोवर के निकट कुसुम वन में महाराज परीक्षित ने ये सारा आयोजन कर दिया। Maharaj Parikshit arranged आ गई और जैसे this कालिंदी यमुना ने समझाया था, arrangement for the Katha, संकीर्तन उत्सव and प्रारंभ they हो गया। started doing or celebrating the Sankirtan festival there by the arrangements of Parikshit Maharaj. सुता कांत विहारे। अब ये शब्द बहुत सुंदर समझने लायक है, आप थोड़ा ब्रेक डाउन करके देखिए। So let's break this word Vrishbhanu. सुता माने वृषभानु, So it means Vrishbhanu Baba, and Suta means daughter, वृषभानु बाबा की बेटी है राधा रानी, and Kant means husband, कांत माने
उनके पति कौन? कृष्ण। So Vrishbhanu's daughter is Radhika Rani, and वृषभानु बाबा की कन्या राधा रानी के पति कृष्ण की her व्याह husband, कीर्तन श्रिया, बहुत सुंदर कीर्तन से वह सब सुशोभित हो गया। the land where भूमि कीर्तन से सुशोभित हो Krishna गई has done और pastimes, साक्षात there ईश्वरावृत they हो गई। started the और Sankirtan, कीर्तन के कारण सारे भक्तों का मन एकाग्र हो गया। and because of the Sankirtan, चर्चा की तरह बागा नहीं मार रहे थे सब। जब कीर्तन होता है तो लोग देखते हैं कब आएंगे, कौन आया, कैसे। यहाँ कहते हैं so they were all concentrated सबकी इंद्रियां जो थी ना बिल्कुल and कीर्तन में रम their चुकी थी। senses were controlled और and हमारे गुरु engaged बहुत in the सुंदर वाक्य था, Sankirtan. सर्वे अनन्य दृशो अभवत। सभी लोग और कहीं And नहीं देख रहे थे। everybody's सबका attention was केवल मन की वृत्ति on जो थी कीर्तन में only में लगी हुई थी। in engaging the senses in the Sankirtana. आसान कीर्तन हुआ, बहुत And in this manner, huge Sankirtan was organized. से कीर्तन महोत्सव हुआ। तब कहते And हैं when this festival was ततः done, पश्यस्तु सर्वेषु तृण गुल्म लता चयात आजग्म उद्धवस्त्रग्वी श्याम पीताम्बरावृता। अब तो क्या था, उसी स्थान पर उद्धव so गुल्म लता के रूप में at the same यहाँ place, भावपूर्ण जब कीर्तन Uddhavji, who was in the form of a plant, he manifested हुए, सभी there. भक्तों ने देखा कि उद्धव जी And when all the devotees saw him, बहुत सुंदर पीताम्बर धारण he करते थे। was जानते ही हैं the उद्धव जी blackish कृष्ण के वस्त्र पहनते थे। complexion, कृष्ण का and he used to wear clothes of Krishna. So he was wearing the yellow clothes और गायन उद्धव जी गीत similar to Krishna, and he is वल्लभम मुहु। decorated with Vaijayanti Mala, भगवान श्री कृष्ण के गीत को गाते हुए उद्धव and जी he वहाँ is प्रकट singing the glories of Lord Shri Krishna, जब उद्धव जी and प्रकट he manifested. तो उस संकीर्तन की शोभा हजारों And लाखों गुना बढ़ गई। the glory of the Sankirtan became tenfold or manifold. लोग अपने अपने स्थान पर बैठ गए। सुध गोस्वामी So कहते when हैं they all sat, कि अथो उद्धव Sud Goswami says, कृष्ण कीर्तन तत्परान सत्कृतार्थ परिष्वज्य परीक्षित उवाचः। उद्धव जी ने सबका सत्कार किया so Uddhavji welcomed everyone and gave them seats. परीक्षित महाराज, क्योंकि ये सारा आयोजन परीक्षित ने किया था। All these arrangements were done by Parikshit ji. He brought everyone there. परीक्षित महाराज को गले मिले So और Uddhav ji परीक्षित का embraced Parikshit Maharaj, and they had a very beautiful conversation. छोटा सा ब्रेक लेते हैं। We will listen to that after a short break. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो बहुत ही सुंदर यमुना महारानी की महिमा के विषय में हम यहाँ पर आज कथा में आस्वादन कर रहे हैं। एंड बहुत ही सुंदर आचार्यों की टीकाओं के माध्यम से प्रभु जी हमें बता रहे हैं जो यमुना महारानी की महिमा विशेष जो हमें जानने को मिला। श्रीला गोस्वामी गोपाल चंपू में से प्रभु जी ने जो बताया कि यमुना महारानी के जो स्वरूप है उस विषय में कैसे कि एक जो स्वरूप है दैट इज आदि भौतिक और दूसरा है आदि दैविक स्वरूप। एंड देन जो आदि भौतिक स्वरूप में विशेष हम प्राय दर्शन करते हैं व्हेन वी गो टू वृंदावन, तो बालू है, यू नो, द डस्ट ऑफ वृंदावन एंड दैट डस्ट, एंड देन अगेन जल जिनका हम प्रत्यक्ष रूप में दर्शन करते हैं जो कि यमुना महारानी साक्षात है और उनका जो तट है जो विशाल। और श्री जुहू गोस्वामी ने जो बहुत सुंदर बताया कि किस प्रकार जो यमुना महारानी की महिमा है कि जो वृंदावन में ये जो रज है उनको स्प्रेड करती हैं सभी जगह को, मतलब दैट रीचेस टू एवरी कॉर्नर। तो बहुत ही सुंदर जो गोस्वामी ने रज की महिमा बताई यहाँ पर, जो प्रभु जी ने यहाँ पर हमें श्रवण कराया। और संकीर्तन की महिमा दैट वाज वंडरफुल, जो कि प्रभु जी ने बताई कि इस प्रकार साथ में रहकर और जो भक्त
हरि में रत है, ऐसे भक्तों के साथ में रहकर कीर्तन करना, हाँ, इनकी महिमा है जो कि हमने प्रभु जी के मुख से सुनी। सो वेरी ग्रेटफुल प्रभु जी कि यहाँ पर हम इतनी अद्भुत कथा श्रवण कर रहे हैं, और कितने अनेक अनेक प्रसंग आज इस कथा के माध्यम से आई, जहाँ पर यमुना महारानी ने जो अन्य सखिय है, गोपिय है, उनको इतना अच्छा जो भगवत वीरा है उनको हो रहा था और उनको शांत किया, एंड हाउ किस प्रकार उनको उद्धव जी के पास भेजने को बुलाया कि उद्धव जी ही आपके इस दुख को दूर कर सकते हैं। तो व्हाट अ वंडरफुल कथा प्रभु जी वी हैड टुडे, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और साथ ही साथ उद्धव महाराज, उनका जो वर्णन है, शिष्य बृहस्पति साक्षात, जो भगवान के उत्तरीय को ही ग्रहण करते हैं, अपीयरेंस वाइज इज नन अदर देन भगवान कृष्ण के ही तरह ही प्रदर्शित होते हैं, दिखते हैं। तो ऐसे उद्धव महाराज की कथा को हमने श्रवण की। सो थैंक यू वेरी मच, और धन्यवाद करेंगे हमारे यजमान परिवार को जो ये सुंदर सहयोग के कारण बस हम यहाँ पर एकत्रित हुए और इस कथा को आस्वादन कर रहे हैं विशेष। तो आइए दर्शन करते हैं आज विशेष, क्योंकि ज्ञान की बातें हम यहाँ पर इस अमृत चर्चा में जैसे प्रभु जी बताते हैं ना, नाउ वी ऑल हैव बिकम स्कॉलर। सो कुछ ऐसी है कि प्रतिदिन प्रभु जी इन जो शास्त्रों के माध्यम से अनेक अनेक बातें बताते हैं, और हमारे गोविंद जी ने बहुत सुंदर व्यवस्था की है कि किस प्रकार इन शास्त्रों की बातों को, इन कोट्स को प्रभु जी के जो एक सारांश रूप में प्रस्तुत करते हैं एंड स्प्रेड्स अक्रॉस। तो just as there is a shloka quoted from different scriptures, जहाँ पर लिखा है कि अनेक संशयोचित परोक्षार्थ दर्शकम सर्वस्व लोचनम शास्त्र यस्य नास्तज्ञ एव च। शास्त्र ज्ञान मनुष्य के संशय को दूर करके उसे ज्ञानी बना देता है। तो हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम जब जुड़े थे इस अमृत चर्चा परिवार को लेकर, हम बीच में प्रस्तुत हुए थे, तो उस समय और आज के समय में हम देखते हैं कि हर कोई अपने भाव को प्रकट करता है और शास्त्र की भाषा बोलता है। तो प्रभु जी यहाँ पर सुंदर सिखा रहे हैं, हमें पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, जिससे कि हम देख रहे हैं कि हमारी क्रमश उन्नति हो रही है। और प्राय अनेक अनेक प्रसंग हमको भी स्मरण रह जाते हैं कि प्रभु जी ने इस कथा के माध्यम से ये चीजें हमें श्रवण कराई थी। तो शास्त्र ज्ञानी बना देता है व्यक्ति को। और कृष्ण स्वयं कहते हैं ना, ददामि बुद्धि योगम थे, जो व्यक्ति मेरी भक्ति या मेरी कथा सुनता है, मैं उनको बुद्धि देता हूँ जिससे कि वो मुझे स्मरण कर सके, एंड देन ही कम्स बैक टू मी। तो व्हाट अ वंडरफुल। साथ ही साथ गुरु महाराज ने भी बहुत सुंदर आज के वक्तव्य में बताया है, आज के दिन की महिमा में बताया है, जिसमें एक शब्द आया था, आज प्रभु जी श्लोका के माध्यम से बता रहे थे अभी अभी कि उद्धव जी कहाँ एकत्रित हुए, कुसुम सरोवर के पास पे, जहाँ पर एक अरण्य था। तो यहाँ पर गुरु महाराज बताते हैं, शास्त्र में वृंदावन को वृंदारण्य भी कहा जाता है, जैसे कि हमने उस श्लोक में अभी श्रवण किया। तो अरण्य शब्द का अर्थ बहुत ही गूढ़ है, जैसे बता रहे गुरु महाराज कि रण का अर्थ होता है झगड़ा और अरण्य का अर्थ होता है झगड़ा करने योग्य स्थान। अतः जिस स्थान में कोई जीव किसी दूसरे जीव के प्रति रण अर्थात झगड़ा न करे, उस स्थान को अरण्य कहते हैं। तो वृंदावन ऐसा ही स्थान है क्योंकि सभी जीव यहाँ हिंसा शून्य है, यहाँ सबकी भातमती एकमात्र श्री कृष्ण में लगी हुई है। सो व्हाट अ वंडरफुल स्टेटमेंट इज कि जो व्यक्ति वृंदावन में एकत्रित होता है, वहां पर इस प्रकार की कोई द्वेष या मलिनता नहीं रहती है। वहां पर सबका ध्यान जो होता है वो भगवान श्री कृष्ण में केंद्रित होता है। सो दैट इज द रीजन दैट वृंदावन इज कॉल्ड अरण्य, और इसे वृंदावरण्य भी कहते हैं। तो गुरु महाराज के आज के कथन है जो कि उन्होंने हरिद्वार में इसको अपनी कथा के दौरान बताया था बैक इन 2001, और वेणुगीत की ये कथा थी। तो बहुत सुंदर भक्तों ने इन गुरु महाराज के कथनों का भी संकलन किया है जो कि प्रतिदिन हम प्राप्त करते हैं। तो और इसी के साथ आवर बिलव्ड श्रील प्रभुपाद, उनके भी बहुत सारे कोट्स हैं जो कि प्रतिदिन अलग अलग वृंदावन के भी आते हैं, और देन जिनकी कॉन्वर्सेशंस भी आते हैं। तो उनमें से एक है जो कि प्रभुपाद ने कलकत्ता में इस बात को कही थी 27 जनवरी 1973 में। यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं, नदी या पानी में जब कुछ गिर जाता है तो पानी के हिलने से आप उसमें कुछ नहीं देख सकते,
वहां खड़े रहकर कुछ समय के लिए प्रतीक्षा करें। जैसे ही पानी ठहर जाएगा आप सब वस्तुओं का देख पाएंगे। तो वैसे ही हमारा उत्साह डावाडोल हो तो अच्छा होगा कि हम किसी मंदिर में बैठकर हरे कृष्ण का जप करें। निराश होने से कोई लाभ नहीं होगा। हमसे कितनी गलतियां होती है, यह मानवीय स्वभाव है। मनुष्य गलतियों का पुतला है, इसमें कोई दोष नहीं है। बस ठंडे दिमाग से उसे सुधारने का प्रयास करें। सो it is a human nature that we often make mistakes and how we can बहुत सुंदर यहाँ पर एक बात की कि जब हमारे जीवन में ऐसा कोई समय आता है जब हम गलतियां कर बैठते हैं, तो वी शुड टेक पोज और गिव अ थॉट। और क्या करना चाहिए कि मंदिर में जाकर भगवान नाम का जप करना चाहिए या हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। तो इस जप करने से क्या होता है, जो हमारा मन है वो शांत होता है और स्थिति को एक बड़े ही ऊपर से देख सकता है। जो हमारी मिस्टेक है उसको समझ सकता है और वी कैन अंडरस्टैंड एंड सी द क्लियर पिक्चर। तो श्रील प्रभुपाद का आज का ये जो सुंदर कथन है वो हमें यहाँ पर श्रवण करने को मिल रहा है। तो ऐसे ही आप प्रतिदिन हमारी जो वेबसाइट है विच इज कॉल्ड lalgovinddas.com, जहाँ पर जाकर आप इस प्रकार प्रतिदिन श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज के द्वारा कथन है ये आप प्राप्त कर सकते हो। साथ ही साथ श्रीमान लाल गोविंद प्रभु जी का भी, क्योंकि प्रभु जी के घर पे भी हम देखते हैं हिज लाइब्रेरी इज फिल्ड विथ बुक्स, लाइक thousands of books are there। और प्रभु जी उनमें से जो भी कुछ पढ़ते हैं उनको यहाँ पर गोविंद जी ब्रॉडकास्ट करता है। तो दैट इज वंडरफुल अपॉर्चुनिटी दैट वी कैन हम भी यहाँ पर इस प्रकार इन शास्त्रों को पढ़कर ज्ञानी बन सकते हैं, या फिर इन सारे कोट्स को बनकर पढ़कर हम लोग समझ सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ पर ये सारी चीजें हैं जो हमारी बुद्धि को सूक्ष्म करती है या तीक्ष्ण करती हैं। तो आइए हम समय ना लेते हैं और निवेदन करेंगे प्रभु जी को कि पुनः ये जो शेष कथा है हमें श्रवण करें। थैंक यू। हरे कृष्णा। श्री उद्धव जी भक्तों के समक्ष प्रकट होते हैं। So Uddhav ji manifests in front of the devotees, and then he tells Parikshit Maharaj, धन्यों से "O king, तुम धन्य हो। क्यों धन्य हो? you are a great king भक्तिया पूर्णों से, क्योंकि तुम एकमात्र कृष्ण की भक्ति से ही परिपूर्ण हो। because you are filled with the pure devotional service towards the Lord. You're filled with bhakti, परम धन्य हो। and that is the reason that you are great." कि कृष्ण की भक्ति में कोई परिपूर्ण है। So if someone says that, if someone is filled with कई बार लोगों का कहना होता pure है devotional service toward the Lord, that is bhakti, उसका so प्रमाण how क्या है? हम कैसे जान सकते हैं? we are going to get to know? उत्तर उद्धव जी महाराज परीक्षित को कहते हैं, So Uddhav ji says तुम धन्य हो, that भक्ति से परिपूर्ण हो। you're great इसका प्रमाण क्या है? and filled with लाइन में the bhakti, and what is the proof? It's mentioned in the second line, निरंतर निमग्न है। because your heart तुम्हारा मन, तुम्हारा is चित्त निमग्न है constantly किसमें? engaged संकीर्तनोत्सवे, भगवान श्री कृष्ण के संकीर्तन के उत्सव में तुम्हारा चित्त पूर्ण रूप से निमग्न है। So your heart is fully engrossed in the Sankirtan of the Lord. That is why it proves that you are filled with the pure devotional service towards the Lord, that is pure bhakti. निरंतर भगवान में और भगवत सेवा में लगा रहता है, वही So व्यक्ति a person who is constantly engaged in the pure devotional service towards the Lord is filled with bhakti. कृष्ण And पत्नीषु और वज्रेच और वज्र नाभ के प्रति and you सुंदर बात है, have समझ में लाए। shown to the wives of Krishna
and his grandson, and by showing this kind of love and affection towards them, it's a great fortune, because to love Krishna is good, but far greater is to love the devotees of the Lord. So your heart is filled with love towards the Lord, and you are serving the elevated devotees of the Lord, his wives, and it suits you as this body was saved by Krishna, because Krishna gave you this body and he saved you. Had he not saved you or protected you, you won't have been present here. As Krishna protected your body, similarly, so it is your righteousness to do the same, or dharma to follow the same. So we should also think that the body that the Lord has given us is also his mercy. He has given us a birth in such an affluent family and has given us so much opulence. We have all the facilities. We are settled with great jobs and business. Everything is moving forward perfectly by the mercy of the Lord. So when you have such the mercy of the Lord, then he should engage himself in Sankirtan and serving the pure devotees of the Lord. He says, at the end of the Dwapar Yuga, on the 28th Chatur Yuga of the Dwapar Yuga, Krishna came himself. And that time he removes the curtain of his external energy, Maya, and reveal himself to the devotees. So Maya is the potency of the Lord, and when Krishna is here in this material world, he removes all the curtains of Maya and reveals himself. But the greatest distress is that the time has elapsed and Krishna has left the material world and reached his eternal abode. So you should listen carefully. When Krishna was there, to look and to serve him and to have pastimes with him was very easy. But once he has left, the time has elapsed. And if someone wants to engage in the pastimes of the Lord, like the gopis or Vasudeva and Nand Maharaj, if we want to fulfill this desire, then we can get this desire fulfilled. So if Parikshit asks how,
अब देखो अंतिम पहली लाइन का अंतिम शब्द है श्रुणु. So the last word of the first line is listen carefully, Shrunu. कृष्ण की अनुपस्थिति It's very में कृष्ण का important ये सौभाग्य that प्राप्त करना है तो in the absence of Lord Shri Krishna, if you want to have this ध्यान से सुनो. opportunity, प्रकाशस्तु then कृष्ण की उस कृपा को उस लीला को यदि आज भी if you प्राप्त want करना है तो एक ही to उपाय है receive श्रीमद् the भागवतम pastimes of the Lord, the only एक ही solution उपाय है is श्रीमद् Shrimad भागवत Bhagavatam कथा. Katha, जब तक or भागवत रस discussing or listening भागवत the कथा रूपी pastimes अमृत of the प्राप्त Lord, नहीं होगा वह and कृष्ण until and unless प्राप्ति नहीं हो सकती. we enjoy और the यदि Bhagavatam, we won't be able to इसका achieve आस्वादन Krishna. करेगा तो जो And if someone नंद और यशोदा ने लिया जो आनंद hears the glories of the सकल Lord जीव and his वही devotees, रस वही then आनंद भागवत they सुनने will वाले be को able to प्राप्त enjoy होगा. the mellows what बहुत Yashoda Rani, Nand Maharaj, and हमें जो ये the मिला है inhabitants भगवान of की कृपा से Vraja बहुत बड़ी चीज है. अब उद्धव जी ने महाराज enjoyed, परीक्षित we के can सिर also पर enjoy. जल बरसा So, by दिया. the mercy of Srila Prabhupada, we have got प्रभुपाद this एक great भागवत की महिमा opportunity. कहते हुए बताते हैं And श्रीमद् Uddhavji भागवतम शास्त्र tells यदा verse by verse यदा the glories of Shrimad इस Bhagavatam. भागवत शास्त्र को इस भागवत ग्रंथ को जहां जब भी भागवत माने कोई भक्त He says that श्रूयते कीर्तन करता है या when श्रूयते सुनता है a highly elevated devotee of the Lord, भागवत जहां Bhagavad, पर the बोला जाता person है सुना जाता है चापी श्री कृष्ण तत्र sings निश्चितम and वहां पर someone भगवान कृष्ण listens, निश्चित प्रकट हो then जाते हैं. Krishna सीधा manifests श्लोक आपके सामने definitely प्रमाण at के that साथ उद्धव place. जी ने ये बात So कही. this is the proof श्रीमद् भागवतम and शास्त्र यत्र is भागवतो mentioned यदा by Uddhavji himself भागवत भक्त कृष्ण का कोई भक्त इस भागवत that का when a कीर्तन करे devotee या of the श्रूयते Lord या सुने तो does कृष्ण तत्र निश्चितम sings भगवान Bhagavatam उस or स्थान पर listens उपस्थित हो Bhagavatam, जाते हैं. then definitely Krishna will और जब manifest at परीक्षित that जी अकेले place. भगवान आते हैं तब दूसरे श्लोक में So उद्धव if जी कहते Parikshitji हैं asks that श्रीमद् will Krishna भागवतम come alone, यत्र so his answer श्लोको that no. श्लोक अर्धमेव च. ये पॉइंट भी नोट करने लायक है. भागवत So सुनना this है point is किसी श्लोकों also very श्लोकों के important साथ that वार्ता रे वार्ता बाबा the गौर चरण Bhagavatam should be heard तो by यमुना ने समझा verse by हरे verse. राम तुम अपने घर पर हम अपने घर पर ऐसा नहीं. श्रीमद् भागवतम So it यत्र should not be done in a श्लोकों haphazard के manner, साथ but should be done पूरा systematically with श्लोक भले आधा verses. श्लोक भी भले हो Even if not श्लोकम the full verse, उद्धव at कहते least हैं half of the यत्र verse. श्लोक अर्धम एव च. He says very आधा practically श्लोक भी यदि कोई that even ध्यान a से half मन से verse भागवत का सुनता is है पढ़ता है तो जब heard or भागवत पांच read श्लोकों के बाद carefully, होता है then तत्र भगवान कृष्ण वहां भगवान कृष्ण प्रकट हो जाते Krishna हैं कैसे manifest वल्लभी along with वल्लभी भी विराजते. Vallabhi, वल्लभी माने गोपियों के साथ कृष्ण means the प्रकट inhabitants हो of जाते Vraja, the हैं. gopis. कहाँ जहाँ भागवत के श्लोकों का गान होता है. So where Bhagavatam is सारी sung, सारी गोपियां Krishna ये नंद manifests नंद with all यशोदा his ये सब gopis. ये जो आज आपके सामने खड़ा किया है ये इसकी महिमा So यहाँ all प्रकट this हो रही hard है. work that we are कितनी सुंदर व्यवस्था doing, collecting and कृपा displaying the करके verses, इतने etc. श्लोकों को देखते हुए समझते हुए So भागवत the सुनते हैं. glories are यदि इस being प्रकार से भागवत सुनते हैं presented तो here in कृष्ण this गोपियों verse. के साथ उपस्थित होते हैं. और फिर हमारी आंखें खोलते हुए कहते हैं भारते मानव And then he says भारत भूमि में यदि किसी मनुष्य का जन्म हुआ that हो if someone is born और in प्राप्त हुआ हो India or भागवत Bharat, और वो भागवत नहीं सुनता है and if he यदि doesn't listens to भागवतम Bhagavatam नहीं yet, श्रुतम वो श्रुतम को ऊपर जोड़ना होगा. मानव जन्म भारत भूमि में यदि प्राप्त हुआ हो so if you get a human life, that too in यशोतः India or वल्लभ Bharat, भागवत नहीं and सुनता तो पाप you haven't heard पापी है. Bhagavatam, कोई कहेगा then he मेरे is a साथ मारा sinner. काटा नहीं तूने किसी को नहीं मारा लेकिन भागवत नहीं सुना तो तूने अपने आप को ही मार दिया. So if you वल्लभ doesn't, if you don't listen to वल से लेकर Bhagavatam, के ना you have killed your वल तक soul. है. आप देखिए भारत भूमि में जन्म लेकर भागवतम नहीं श्रुत If you are भागवत नहीं born सुनता है in तो Bharat वो and you पापी haven't है. heard Bhagavatam, ऐसा then किसी ने he is कहा a भागवत sinner. नहीं सुनने वाला पापी. हाँ पापी है.
the papi or sinner is one who kills somebody else, someone. So it means who he kills himself, he's destroying himself. And in this way, he is a great sinner and an offender. He further adds, he says that if somebody listens or serve Bhagavatam on a daily basis, filled with mellows of bhakti or pure devotional of the Lord. So if everybody, the organizer, the orator, and the listener serve the Bhagavatam with mellows of love and devotion, then their parents, their spouse, and even the whole lineage will get liberated. So just by listening to Bhagavatam, the whole lineage gets liberated. And this is what Uddhavji is revealing to Parikshit Maharaj on the banks of Yamuna ji in Kusum Sarovar. He adds further, that wherever Bhagavad is organized, or if somebody listens to Bhagavatam, if he is a Brahmin, then he will get wisdom or knowledge, and the kings or princely state will get victory, and the business or class or mercantile will gain wealth, and the serving class gets perfect health. So now it mentions about the women. So usually it's seen that women has more desires. So it's mentioned here that all the desires of the women are fulfilled if they listen to the Bhagavatam. Therefore, so there is so much glories of Shrimad Bhagavatam. So who will be the one who will not serve the Bhagavatam? If they are fortunate, then they will definitely serve Shrimad Bhagavatam. He says that for many, many births, if someone so if someone serves the Lord, if someone serves the Lord through yoga system for many, many births, then he gets siddhi, and by that he gets an opportunity to listen to Bhagavatam. And by that, the pure devotional service towards the Lord, that is bhakti, manifest. So, Parikshit, earlier, this Bhagavad was told to Lord Brihaspati ji, and from him I have heard this Bhagavatam. And now
people call me friend of Krishna तो कृष्ण का as his प्रेम favorite बनने का राज friend. क्या है? राज यही And है the reason behind बृहस्पति me जी being ने so close to इसका him ज्ञान is ग्रहण that किया था। मैंने I have बृहस्पति got जी this महाराज knowledge को from देखा था। Brihaspati ji himself. इसलिए हे विष्णुराज, हे परीक्षित, So, oh तुम Vishnuraj, मुझे सहाय करो। Parikshit, मैं यहाँ पर भागवत का you पाठ help करूंगा me and I will read the इस Bhagavatam, भागवत का पाठ मैं ठीक से कर सकूं, यहाँ के लोग ये and भागवत so that ठीक से I सुन can सके, do it ऐसी व्यवस्था करो। perfectly. You make the जब arrangements. इस प्रकार से सूत जी ने कहा, महाराज परीक्षित प्रसन्न हुए So, in this way, और महाराज परीक्षित ने Parikshit कहा ji कि मैं धन्य became हूं very happy and elated हे after हरिदास listening to जी, Uddhav ji, and he said that आप निश्चिंत होकर I भागवत का am कीर्तन really करो grateful और यहाँ पर and जितने भी लोग you यहाँ can उपस्थित हैं सबका उद्धार sing करें Bhagavatam और बताइए carefully मुझे क्या करना है, and perfectly मेरे लिए and आप let me know what is my role, what should I do. कई बार लोगों के मन में प्रश्न होता है ना कि भागवत So आयोजन sometimes करने people have a वाले की question क्या that महिमा है, what भागवत is का the आयोजन करने वाले glory की क्या of the उद्धव जी organizer of the Bhagavatam उद्धव Katha. जी कहते हैं कि So परीक्षित Uddhav ji एक काम says, करो, श्री कृष्णेन परित्यक्ते भूतले बलवान का। Parikshit ji, you do one भगवान thing. श्री कृष्ण जब इस संसार को छोड़कर चले गए हैं तब When Lord कलयुग Shri इस Krishna संसार left में the प्रवेश कर world, चुका है then और ये the कलयुग Kali Yuga has entered this संत world कार्य में बहुत बहुत विघ्न and प्रदान करता है, इसलिए he परीक्षित intervenes तुम एक in काम करो, तुम यहाँ से the निकलो all the और good अपना deeds विजय as करो, it is the age of quarrel संसार के and सभी hypocrisy. विषयों को तुम जीतो और So कली निग्रह you आचर और कलयुग का be a निर्वाण करो। victor in all the परीक्षित तुम directions यहाँ से of निकलो the और material अपना world. विजय प्राप्त करो और मैं यहाँ पर रहकर एक And, महीने तक and by the time श्रीमद् in भागवत का 1 month, गान करूंगा। I will sing the glories of कैसे Shrimad Bhagavatam. कैसे श्रीमद् भागवत And सुनाऊंगा? how I will बहुत sing, सुंदर एक श्लोक, एक शब्द यहाँ पर आया है, it's presented in the आप verse देख सकते हैं। present in अहम front of your screens. मास मात्रेण वैष्णवीम रीति मास्थिता, मैं वैष्णव विधि से एक महीने तक इन कृष्ण की So he says that I will follow the Vaishnava principle, यहाँ पर एक and for शब्द 1 month I will sing the glories of Shrimad Bhagavatam. वैष्णवी रीति So here is a word, सुनाऊंगा। Vaishnavim इसका Riti. अर्थ कि भागवत सुनाने की बहुत सारी विधि है, It means उनमें that मुख्य दो there विधि are हैं, many एक procedures कर्मकांड to विधि speak और एक Bhagavatam. वैष्णव First विधि। is Karmakand, and the second is the कर्मकांड विधि Vaishnav Riti. जिसमें So कर्मकांड का अर्थ Karmakand होता Vidhi है is जिसमें where सुनने की the इतनी महिमा fruitive है, action बस आरती is पूजा देख important. करके इसमें ज्यादा So the नहीं है। glory जैसे of listening सत्य that is नारायण not की much. आप लोग अटेंड किए हैं, सत्य Similar नारायण की to जहाँ होती the है, Satyanarayan सुनने की Katha इतनी महिमा नहीं, और that is सुने वाले केवल arranged वो सुनते रहे। usually. पंडित जी जब So, शंख बजाकर अध्याय समाप्त करते तब and सुनते usually people don't even listen carefully और to the Katha. कर्मकांड विधि से जो भागवत या जो भी कथा होती है उसका फल एक लिमिटेड लेवल पर होता है, उसे And संसार में थोड़ा बहुत the सुख Katha मिलता है, done through the ज्यादा Karamkanda सुख नहीं procedure मिलती है। has limited परंतु potency वैष्णवी विधि or से अगर result. कोई भागवत का गान करता है But या if we भागवत सुनता है do तो उसका Bhagavatam भगवत with प्रेम the बढ़ जाता Vaishnava है। procedure or principles, सो हम लोग then जो they भागवत will सुनते हैं बोलते हैं receive वो the pure वैष्णवी रीति devotional से सुनते service हैं, of the Lord वैष्णवी and रीति के अनुसार। the love of the God सो or परीक्षित Lord. मैं यहाँ पर भागवत सुनाऊंगा और भागवत सुनाकर सबको गोलोक धाम में भेज दूंगा, तुम यहाँ से निकलो। So I will परीक्षित ने पहले तो sing कहा कि the हाँ glories ठीक of है, Bhagavatam and ऐसा I will करो, send them अच्छा all to the तुमने eternal बात abode तो of the सुनी। Lord. तो So फिर सब Parikshit ji कहने लगे said महाराज that, ये तो गड़बड़ हो गई, okay, I will do आप the यहाँ same. पर भागवत But करोगे और मैं वहां then जाकर युद्ध on करूंगा, contemplation, he तो realized मैं that तो भागवत से वंचित ही रह I जाऊंगा। won't be able to listen to मैंने कहा Bhagavatam. आपने भागवत की इतनी महिमा बताई, You तो have मुझे क्यों told बोल रहे हो so कि जाओ, much glory of the मुझे भी भागवत Bhagavatam, बता दो। and now you are telling me to go away. उद्धव जी ने बहुत सुंदर कहा, परीक्षित So Uddhav ji तुम said, यहाँ पर भागवत की व्यवस्था कर रहे हो,
that you are doing the arrangements for this grand Bhagavatam Katha, and a person who arranges the Bhagavatam Katha, then Krishna arranges for them to listen the Bhagavatam Katha. Nowadays, it has become very convenient that the organizers can also sit and listen to the Bhagavatam Katha. We have seen the person who organized the Bhagavatam Katha, they don't even are not able to listen even one word because they are so much engaged in taking care of the devotees. So a few days back, there was a season of marriage. And so the real pleasure is enjoyed in the marriage is by the relatives, but the person who organized is totally burnt up with so much work. So the listeners enjoy the Bhagavatam while the organizer get engaged and he's not able to listen. So for them, Uddhavji says that the person who arranges the katha for others or the devotees, then that devotee or that organizer, his arrangements for him to listen the Bhagavatam is done by the God or Lord himself. So you might not be able to listen to Bhagavatam today, but during the time of your death, Krishna will arrange for the Bhagavatam Katha for you. And Shukdev ji will come to you and you will be able to listen from Shukdev Maharaj. And this is what happened at the time of his death, when only 7 days were left. He was standing at the banks of Gangaji. And what if Shukdev Goswami might have came late, but he came at the exact time and sing the glories of Bhagavatam. It is not a coincidence. Bhakti is not about coincidence. It is about the arrangements done by Krishna for his devotees. So Parikshit Maharaj left and Uddhav ji sang the glories of Bhagavatam. So for 7 days, the katha was organized and heard, and everybody got engrossed in the Bhagavatam. And on the seventh day, all the wives of the Lord left for the eternal abode of the Lord. And one by one, they all left for Goloka Dham or eternal abode of the Lord and reached Krishna to serve him eternally. So this is written by Vedvyas Muni in Skanda Puran. So Krishna's wife also got the Lord by the mercy of Yamuna Maharani. If she has not shown the path, they wouldn't have been able to go to the eternal abode of the Lord. So Yamuna ji has the power or potency to provide Krishna Prem and Bhakti to us, and we are sitting in the shelter of Yamuna ji. And now let's end the second day session. You have heard with so much patience. Thank you so much to the organizers.
who has arranged this beautiful katha for in memory and reverence of their ancestors. जय श्री बहन, प्रतीक भाई, दर्शना बहन, कुलीन प्रभु, मोहिनी माता और कमलेश भाई, अर्पणा भाभी, आप सभी भक्तों को, देखिए सब अपने अपने लड्डू गोपाल लेकर बैठे हैं, सबके लड्डू गोपाल अपने अपने साथ हैं और So everybody has their own Laddu Gopal, and the Lord is also listening to the katha. I like Pratik Bhai. So, that he has such an arrangement that Darshana Mata and Pratik Bhai sleep with Laddu Gopal in their bed, and they wake them up on time, and they do so much austerity and take care of the Ladduji, and such is the mellow. And the network that we are facing some trouble, so let's hope that it gets proper and perfect tomorrow. With that, let's end the session with Jai Jaikar.